Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 25th of January. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about Beti Bachao Beti Padhao, which has completed 10 years. Then we will be talking about a report that will be talking about India's digital economy, how it has impacted us, what is the value of it, and how we are going further with this economy. Next thing we will be talking about is Ministry of New and Renewable Energy. Next thing we will be talking about India and South Korea, where they conducted a exercise. Basically it was for education sector. We will be discussing it. Then next thing we will be talking about is an MOU that has been signed for Indian exporters to provide them with financial help as well as logistic support. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned us with till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. That helps you prepare for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Beti Bachao Beti Padhao. It has recently completed 10 years. Now what is this Beti Bachao Beti Padhao scheme, right? This was launched by the government of India, right? And this scheme was launched in 2015 in Panipat, Haryana, right? It was launched by Prime Minister Narendra Modi when he was in Panipat, Haryana on 22nd of January 2015. This scheme was launched. This is a 100% center government funded scheme and it was implemented in all the districts of the country. The main aim, as the name suggests, Beti Bachao Beti Padhao, right? Here the women or the girls, they were encouraged to get education, right? And when they will be getting education, even their marriages will be postponed, right? Earlier we used to see that the child marriage was very prevalent in the backward districts or in the rural areas. So to prevent that, girls were asked or the girls were encouraged that they should take up education, they should take their step towards education and they can delay their marriage, right? Take a note of this. So Beti Bachao Beti Padhao completed 10 years. This scheme was a collaborative efforts of Ministry of Women, Child and Development along with Ministry of Health and Family Welfare along with Ministry of Education. So collaboration of all these ministries were required to take or carry out this particular scheme. Correct? Take a note of this. Apart from this, as I mentioned, it is a central sector scheme, so 100% funded by the central government, and this scheme is now based on multi-sectoral approach that includes your health, education, child development and community awareness. Moving on, then Mission Shakti. We know this Mission Shakti, it comprises of two parts, right? What is Mission Shakti first? Remember this Beti Bachao Beti Padhao, this was integrated with Mission Shakti. Mission Shakti was a program for women safety and empowerment only, right? This was launched during the 15th Finance Commission period from FY22 till FY26, and there are two components under this Mission Shakti scheme, that is Sambal, that is safety and security, and Samarthya, that is empowerment. Moving on, now what is the objective of this? We have seen this, that to improve the sex ratio at birth, to educate the girls, to protect the girls, right? And many more. Next
Next is Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda ji and Union Minister of Women, Child and Development Annapurna Devi. They have jointly inaugurated the 10th anniversary celebration of this Beti Bachao Beti Padhao. Moving on, next is IER. This report was recently released. What is this IER? IER, that is Indian Council for Research on International Economic Relationship, right? So recently in this report, India's digital economy contribute 1/5 of the GDP, right? So this data we can say MEITY, that is Ministry of Electronics and Information and Technology. They have released a data. It is on economic digital economy that was prepared by IER. This stated that 1/5 of the India's economy is or because of the digital economy. We have seen UPI, right? We have seen Aadhaar card, we have seen eKYC guidelines, then e-signature, right? Then there is DigiLocker, that every document you can store it there. Nowadays all the payments you see, almost I guess even my audience right now, I guess almost 70 to 80% of my audience, they are making daily online payments only. If you are going to a shop market or if you are going to a particular shop and you want to pay something, I don't think so you will be using or you are using cash. You are just paying through the online medium, right? Then if you want to conduct any exam, right, you are going for an exam, everything is in the online mode. Then if you want to apply for any exam, that is online mode. If you want to apply for any document, that is online. If you want to apply for a permission or certification for a business, that is online, correct? So everything is getting digitized, right? And this digitization, it plays a very important role in the country's growth. So here India's digital economy, they contribute 1/5 of the GDP. That means if we say 100%, that means 20% of the India's GDP comes from the digital sector, right? If we talk about this only, according to this report, India's digital economy is projected to grow nearly twice as fast as the overall economy, contributing to almost 1/5 of the national income by 2030. The report estimates that India's digital economy account for 11.74% of the income in FY23. Right now it is almost 12%, but by FY23 it is expected to be almost 20%, right? Take a note of this. Moving on, also in FY23, the digital economy accounted for 14.67 million workers or 2.55% of the India's workforce, whereas the agriculture accounted for 263.6 million workers, while manufacturing employed 65.6 million workers. Moving on, if we talk about globally, India's digital economy report states that India is the third largest digitized country in the world in terms of the economy. On the top, it is USA, followed by China, and it ranks 12 among the G20 nations in individual user digitalization. Also remember, if we talk about the startup ecosystem, in that also India stands at the third position, and India's digital economy index, if we talk about, it stands at the third position. Moving on, next is MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy. According to this ministry, a report was released that stated that the total renewable energy installed capacity has risen 15.84% to 209.44 gigawatt in 2024. This data released by Ministry of New and Renewable Energy. We are seeing that new green projects are being taken care of. Then we are seeing that renewable energy is in the focus right now. We are focusing on sustainable development goals, hence we are focusing on more green projects and renewable energy projects. We are seeing that increase in solar energy, wind energy, right? We are seeing green fuels such as your green hydrogen, green methanol, right? These are the clean fuels. So such type of renewable energy is being encouraged. Even you are seeing now electric vehicles are in demand, right? Two-wheeler electric vehicles, four-wheeler electric vehicles. Why this? Because they reduce the pollution, right? And also they consume less amount of electricity per kilometer, right? Coming back, so Ministry of New and Renewable Energy, according to them, as of December, India's total renewable energy installed capacity has reached 209.44 gigawatt, that is a 15.84% increase. Also, as of December, we saw this solar energy dominated with 24.5 gigawatt of new capacity installed, and wind energy also contributed to India's renewable energy goal. A total of 3.4 gigawatt of wind capacity was added in 2024. Then one more thing, remember, the year 2024, it was a great year as we have seen a record-breaking growth in solar and wind energy capacity. If we talk about solar energy, remember it is Rajasthan that is taking the lead in terms of solar energy growth in India. Even in the rooftop solar energy sector, we are seeing that
Gujarat is leading it. Whereas if we talk about the wind energy sector, in this it is Gujarat that is taking the lead in terms of the states. Right? Next. Next is India and South Korea. They have conducted the exchange of notes for NCRT's technical cooperation project. See, NCRT, what is the NCRT? National Council. The NCRT is your National Council of Educational Research and Training, right? This is basically your books or the syllabus that is being made by them so that the school students can learn. They decide the syllabus, right? So recently various notes of NCRT technical cooperation project, for them an MOU was signed between India and South Korea. Correct. Now in this project, this first thing, remember, this project will be for 2 years, and under this it will be what, like how the vocational and technical education should be there in the schools, right? What are the what are the skills, what are the education, what should be the syllabus for the students that are going on in school, right? What they should learn, what are the vocational and technical courses that should be taught to them, what should be their curricula, which textbook should be there, right? How the teacher should teach them, what are the skills that are required by the teachers. All these things will be covered in this cooperation between India and South Korea. Moving on, next is FIEO and Credilix. They have recently signed a memorandum of understanding to empower the Indian exporters with financial and logistic support, right? So directly remember FIEO, that is Federation of Indian Export Organizations. This is the apex body for the exporters in India, and they have signed this memorandum of understanding with Credilix. This is a global leader in supply chain financing, and this will boost the growth of Indian exporters and strengthen their international relationship. Also, this partnership will address various key challenges that are faced by the exporters by combining the extensive network, right? And various initiatives such as your workshops, training, financing, advisory, technical support will be provided to businesses so that their operations can be flexible or their operations can run effectively. Correct? Take a note of this. Next is Ministry of Defence. They have signed a contract worth 1561 crore rupees with Heavy Vehicles Factory for 47 T-72 bridge laying tanks. I repeat, this contract is worth how much amount? You remember this amount, that is 1561 crore rupees, and here it is with Ministry of Defence. The deal with Chennai, Tamil Nadu based Heavy Vehicles Factory. This is a unit of Armored Vehicle Nigam Limited, and this is for the acquisition of how many? 47 tanks that are T-72 tanks, right? Take a note of it. Next is Niti Aayog and NASSCOM Foundation. They have partnered to digitally empower 1 lakh people, right? And what is Niti Aayog? National Institute for Transforming India. NASSCOM, National Association of Software and Service Companies, right? They have partnered together to provide digital skills to 1 lakh individuals, then aim to produce the digital divide, right? See, skills here: artificial intelligence, machine learning, cloud computing, data analytics, in which SQL, right? Your Tableau, correct? So all these things will be provided, and many more languages are there, many more technical skills are required, right, in today's generation to process ahead. And here you will be seeing these two organizations have came together to empower almost 1 lakh people with skills here. Next is banking and finance. PNB MetLife, they have partnered with True Home Finance to offer group credit life insurance. So I repeat, Mumbai, Maharashtra based PNB MetLife India Insurance Company, they have partnered with Chennai, Tamil Nadu based True Home Finance, and this is to offer group credit life insurance to home loan customers of True Home Finance, right? The group the group credit life insurance solutions provide homeowners and their families with financial security by covering the outstanding loan liabilities in the event of an emergency, right? And this is basically in it aligns with the vision of India, that is to provide insurance for all by 2047. Next is economy and business. Geo Financial Services and BlackRock, they are expanding into the stock broking sector. Even if you remember, a Geo Money was launched, and here these are the crypto coins that has been launched by Geo, right? It is also one step ahead in the financial sector. So coming back here, Geo Financial Service Limited, they have announced their joint venture with BlackRock Investment, right? And
they have launched this Geo BlackRock Broking Private Limited. They will be entering into the broking business. This will be similar to that of your Grow platform or Zerodha that we are seeing. So here, this Geo BlackRock Broking Private Limited, they will be also launching a similar kind of website or an application that will, from where you can buy and sell equities, stocks, your mutual funds, ETFs, etc. Next is NTPC. They have partnered with Sri Lanka for major solar project. I repeat, New Delhi based NTPC, they have partnered with Ceylon Electricity Board of Sri Lanka to develop a 50 megawatt project, right? And it will be where? It will be in Trincomalee in Singapore. Correct? Take a note of this. Moving on. Next is awards and recognition, students. Forbes 2025 billionaires list was released and Elon Musk has emerged as the richest individual. His net worth, if we talk about Elon Musk, is staggering $433.9 billion. That is very huge, right? He is the only individual who became the first person to cross $300 billion and now at $400 billion evaluation or his net worth, right? No individual has crossed the 300 mark so far. He is the only one, and it is expected that by 2027 or by 2028 he will become the first trillionaire ever to exist in the history. Correct? So Elon Musk secured the first position here. You can see he became the first individual to cross a net worth of $400 billion, mainly because of the SpaceX valuation of $350 billion. According to this, USA is on the top with 813 billionaires, followed by China with 473 billionaires, and India is on the third spot with 200 billionaires. Right? Then Elon Musk was on the first position, then Amazon founder Jeff Bezos on the second position, then on third is Mark Zuckerberg on the third spot, right? Then Larry Ellison and so on. Moving on. Next is Amrit Mohan Prasad to hold the additional charge as BCAS Director General. What is BCAS? BCAS is your Bureau of Civil Aviation Security. So Amrit Mohan Prasad to hold the additional charge as the Bureau of Civil Aviation Security Director General for next 6 months. Right? He is currently the Director General of Shastra Seema Bal and he was given the additional charge. That means he will also hold the position of Director General of Shastra Seema Bal as well as he will have the position of the Director General of Bureau of Civil Aviation Security, and this additional charge is given for next 6 months. He will succeed whom? He will be succeeding Zulfikar Hassan. Correct? Take a note of it. Next is science and technology. ISRO has dispatches the crew module for first uncrewed mission of Gaganyaan. See, first let's talk about this Gaganyaan mission only, right? Gaganyaan mission, this is a crewed spacecraft mission being developed by ISRO, and this will be the first crewed flight. It is expected to be launched in 2026. With this, India, our country, will become the fourth nation to launch their own crewed mission after Russia, USA and China. Correct? Here, this Gaganyaan, it consists of two modules, that it is your crew module and service module. Correct? Now coming back, ISRO, they have dispatched crew module for first uncrewed mission of Gaganyaan. Right? Now what this is, here you can see Bengaluru, Karnataka based Liquid Propulsion System Center of ISRO. They have dispatched this crew module for the first uncrewed mission of Gaganyaan to Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh, right? And it has completed the integration with the liquid propulsion system. This crew module propulsion system, it is a bipropellant reaction control system designed for precise 3-axis control for the crew module, right? Don't go into the details. Just remember this recently crew module has been dispatched recently, and as you can see, this is the crew module in which the crew will be sitting and will be taken into space, right? And now it has been dispatched. Next is Sarla Aviation. They have unveiled India's first air taxi prototype, that is Shunya, expected to be launched by 2028. I repeat, Bengaluru, Karnataka based aerospace startup company Sarla Aviation Private Limited, they have unveiled India's first electric vehicle takeoff and landing air taxi prototype, that is EVTOL. What is this? Electric vehicle takeoff and landing air taxi, right? The name of this is Shunya. Correct? Take a note of this. This was launched at the Bharat Mobility Global Expo 2025 that was held at Bharat Mandapam in New Delhi. Correct? Take a note of this. Then apart from this Shunya prototype, it has been for short trips within the range of 20 to 30 kilometers and can reach a maximum speed of up to 250 kilometers per hour. Moving on, next is environment. Researchers discovered 2 new goby fish species in
Andhra Pradesh. I repeat, researchers from the Zoological Survey of India discovered two unrecorded goby fish species, that is Hemigobius hovinei and Mugliogobius tigrinus. Right, these are the two species, two new goby fish species that has been discovered in Andhra Pradesh. Take a note of them. Next is obituary. Former El Salvador President Mauricio Funes, as you can see him in the picture, has recently passed away. Carlos Mauricio Funes has passed away at the age of 65 in Nicaragua. He was born in 1959 and he served as the president of El Salvador from 2009 to 2014. Next is important days. International Day of Education observed on 24th of January, and it is to celebrate the role of education in promoting peace and development. This year it was the 7th edition of this International Day of Education. There is a theme for this, theme being AI and education, preserving human agency in a world of automation. This is the theme here that you need to remember. For the first time this day was observed in 2019. Next is National Girl Child Day, observed on 24th of January. This day is observed basically to promote the importance of girls in or to promote the importance of education, health and nutrition amongst the girls. The day also issues the day also addresses various issues such as your child marriage, discrimination and other forms of challenges that are faced by the girls in the Indian society. This year it was the 17th edition of the National Girl Child Day that was observed on 24th of January. Also, it was the 10th anniversary of the Prime Minister Narendra Modi's Beti Bachao Beti Padhao that we just saw in the starting of this video. Also, there was a theme for this National Girl Child Day, theme being empowering the future of India. This is the theme here that I want you all to remember. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Who was appointed as the brand ambassador or national ambassador here? So Rashmika Mandana, a very famous actress, she will be appointed here, or she has been appointed here as the brand ambassador for cyber security by Indian Cyber Crime Coordination Center. Next, who was recently declared as the 6th president of Botswana? So Duma Boko, right, a 54-year-old Duma Boko was appointed as the 6th president of Botswana. Next, who he succeeded? He succeeded Mogwetsi Massis, right? He succeeded the option 1. Next, who was recently or who has recently been designated by the PFRDA as the chairman of the board of NPS Trust, that is National Pension System Trust. So who has been designated as the PFRDA chairperson, right? Chitra Jayasinghe. Chitra Jayasinghe has been appointed as the chairperson of the board of NPS Trust by PFRDA. Chitra will succeed whom? She will be succeeding Venkata Rao Yadagini. Next, who has been recently appointed as the Director General designate of the International Corps Research Institute for the Semi-Arid Topics. So who has been appointed here? Dr. Himanshu Pathak has been appointed here, right? Take a note of it. Next is who has been recently elected as the 47th president of United States of America. So Joe Biden, Donald Trump has been appointed here, and he succeeded whom? He succeeded Joe Biden. Joe Biden was the 46th, and for Donald Trump this is the second term. Earlier he was the 45th president of USA, and now he is the 47th president of USA. Next, who was recently appointed as the chairperson of SSC? So S. Gopal Krishnan was appointed as the chairperson of SSC. He succeeded whom? He succeeded Rakesh Ranjan. Next, who was recently appointed as the chief executive officer of JP Morgan Chase and Co Domestic Banking Unit, that is for JP Morgan India. So Pranav Chawda was appointed as the CEO of JP Morgan India. Pranav Chawda succeeded whom? He succeeded Pradev Singh. Next, who has recently been reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Axis Bank Limited. So Amitabh Chaudhary was recently reappointed as MD and CEO, Chief Executive Officer of Axis Bank Limited, and he will be in this position for the next 3 years. Next, who has recently sworn in as the 51st Chief Justice of India? So Justice Sanjeev Khanna, right, was sworn in as the 51st Chief Justice of India. Next is
who has been recently re-elected to a second term as the president of Moldova. So Maya Sandu, correct, was re-elected to the second term as the president of Moldova. Next, who has recently been appointed as the brand ambassador for the upcoming Jharkhand elections by the Election Commission. So Mahendra Singh Dhoni was appointed as the brand ambassador for the Jharkhand elections by Election Commission. Next, who has recently appointed as the Executive Director of Regional Cooperation Agreement on combating piracy and armed robbery against the ships in Asia Information Sharing Center in Singapore. So VD Shefkar was appointed here as the ED. He will be replacing whom? He will be replacing Krishnaswamy Natarajan. Next, who has been recently elected as the new Secretary General of International Crime Police Organization, that is Interpol. So, who has been here elected as the new Secretary of Interpol? So, Valdesi Arkiza elected as the Secretary General of Interpol. Next, who has been recently appointed as the new Managing Director of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, that is NAFED. So who has been appointed here? Deepak Agrawal has been appointed here as the new Managing Director of NAFED. Next, who has recently took over as the Chairman of Airports Authority of India, right? So Vipin Kumar has been appointed as the Chairman of Airports Authority of India. He will be succeeding M. Suresh. Next, who will take over as the Managing Director and Chief Executive Officer of Bharti Airtel in January 2026. So, Shashwat Sharma, right, will take over as MD and CEO of Bharti Airtel and he will be succeeding Gopal Vittal. Next, who has been recently appointed as the new Chief Secretary of Jharkhand? So, Alka Tiwari was recently appointed as the new Chief Secretary of Jharkhand. Next, who was recently appointed as the Prime Minister of Mauritius for the third term? So, Naveen Chandra Ramgoolam was appointed as the Prime Minister of Mauritius for the third term. Next, Alex Dider Felix Aim was recently sworn in as the interim Prime Minister of Haiti. Next is who was recently appointed as the Chief Executive Officer and Managing Director of Multi-Commodity Exchange of India. So, Praveena Rai was recently appointed as CEO and Managing Director of Multi-Commodity Exchange of India Limited. Next, who has recently elected as the 13th President of International Hockey Federation? So, Mohammad Tayyab Ikram was appointed as 13th President of FIH. Next is who has been recently appointed as the new chairman of IOCL, that is Indian Oil Corporation Limited. So Arvind Singh Sahani was appointed as the new chairman of IOCL and he will be appointed here for a period of 5 years. He replaced whom? He replaced Satish Kumar Vadugiri. Next, who has been recently appointed as the 17th Prime Minister of Sri Lanka? So Harini Amrasurya was appointed as the 17th Prime Minister of Sri Lanka. Next, who was recently elected as the 6th President of Somaliland? Right, who was appointed here? Abdirahman Muhammad Abdullahi was appointed here as the 6th President of Somaliland. Next, who was recently appointed as the Prime Minister of Uzbekistan? So, Abdullah Nigamatovich Aripov was appointed here as the Prime Minister of Uzbekistan. Next, who has recently joined All Living Things Environmental Film Festival as the Goodwill Ambassador? So, right option here is Shriya Pilgaonkar was appointed here as the Goodwill Ambassador for the All Living Things Environmental Film Festival. Next, who has recently been appointed as the new Prime Minister of Mali? So, Abdoulaye Maiga was appointed as the new Prime Minister of Mali. Next, who has been recently appointed as the new Chairman of the Supreme Court Legal Service Committee? Right? So, who has been appointed here? Justice Surya Kant was appointed as the new Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee. He replaced Justice B.R. Gawai. Next, students, let's move to the homework section. First question is, tell me, India along with which country has partnered and they have signed an agreement where they will be talking about critical minerals. Second question, tell me, recently
which country will be hosting the 28th edition of CSPOC? Right, CSPOC, and also give me the full form of this CSPOC and name that country. Third question, which country became the 34th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Fourth question, recently tell me which country is having the most powerful passport in the world, right? And what is the rank of India in this passport? Then one more question, student. Fifth question is, tell me recently, if I ask you, who became the 47th president of USA and 50th vice president of USA? Tell me. So these are your 5 homework questions, students. If you find this session interesting, do hit the like button, right? And share the link of this video with your friends. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 25 जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के बारे में, जिसके 10 साल पूरे हुए हैं। देन हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो बताती है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 20% हो जाएगी हमारी जीडीपी की बाय 2030। देन हम बात करेंगे जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, मेथनॉल, राइट, इससे हमारा कितना हमारा सेक्टर है, हमारे कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, कौन सी स्टेट किस सेक्टर में ग्रो कर रही है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया एंड साउथ कोरिया के द्वारा अभी बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा एंड क्या इसका इम्पैक्ट होगा, उस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे FIEO एंड क्रेडिलिक्स, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया है ताकि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिकली हेल्प किया जा सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी मोर न्यूज़ इसके अलावा जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपके लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। एम्पावरिंग इंडियाज डॉटर स्कीम जो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या था कि बच्चों को, हम जानते हैं पहले बच्चों को, गर्ल्स को अगर होती थी उनको मार दिया जाता था, राइट, उनकी जल्दी शादी करा दी जाती थी, राइट। तो इन सब से बचाने के लिए गर्ल्स को एजुकेशन की तरफ ले जाया गया, राइट, कि आप एजुकेटेड हों, स्किल्स लें एंड अपनी जॉब करें, राइट। तो इसको प्रमोट किया गया था, इसीलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं इस स्कीम के। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि 100% फंड किया गया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये स्कीम में कई मिनिस्ट्रीज का भी हाथ था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन सब के कोलैबोरेशन से ही हमें ये सक्सीड होती हुई दिखी और आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंज आता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। आजकल सभी गर्ल्स, बहुत सारी वीमेन गर्ल्स ऐसी हैं जो कि अपनी एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं, राइट, वो अपनी एजुकेशन पे फोकस रखती हैं, राइट। एंड शादी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है, वरना पहले तो 18 साल से भी पहले उनकी शादी हो जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसी के
अलावा एक मिशन शक्ति के बारे में याद रखेंगे, ये भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति के साथ इंप्लीमेंट किया गया था ताकि वीमेन सेफ्टी एंड उनके एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जा सके। इस मिशन शक्ति के 2 पार्ट थे, संभल एंड समर्थ है। संभल क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड समर्थ है एम्पावरमेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर हमने भी क्या देखा कि 10 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, विज्ञान भवन में ये सेलिब्रेशन था न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है टू कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द जीडीपी बाय 2030, राइट। ये जो डिजिटल इकोनॉमी में आ जाते हैं ना, जैसे हमने देखा आधार कार्ड लॉन्च किया गया था, फिर हमने देखा ई सिग्नेचर आया, उसके बाद हमने देखा आपका डिजी लॉकर आया, राइट। देन हमने यूपीआई आते हुए देखा। इनसे सब चीज़ों से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि इंडिया ना बहुत डिजिटल एडवांस हो गया है। इवन आप देखेंगे, आप मेरे जितने स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे को भी देख रहे हैं वीडियो, उनको भी आप खुद अपने लाइफ के को एनालाइज करके देखिए कि पहले आप कैश का कितना यूज़ करते थे और आज के टाइम पे आप कैश कितना यूज़ कर रहे हैं। आई बेट आप कुछ भी दुकान से सामान लेने जाते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, राइट। सब कुछ ऑनलाइन चलता है, राइट। तो कितना ज़्यादा हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप सभी फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, राइट। आपके एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे हैं। आपका बिजनेस है, आप कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन चल रहा है। तो सभी चीज़ ऑनलाइन होती हुई हमें दिख रही है, करेक्ट। तो ऐसे ही एक रिपोर्ट ICRIER जो कि है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी जो रिलीज की गई MEITY के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो बताती है कि इंडिया की इकोनॉमी एज ऑफ नाउ, अगर मैं बात करूँ FY23 का ये डाटा है, तो FY23 के हिसाब से देखें तो 11.74% GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका। लेकिन यही डाटा एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक बढ़ के ये बाय 2030 हो जाएगा ऑलमोस्ट 20%, जो कि है 1/5 ऑफ द GDP। काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमें ये सेक्टर ग्रो होता हुआ आगे दिखेगा, राइट। इवन अगर हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी में 14.67 मिलियन यहाँ पे वर्कर्स देखने को मिले, जो कि है 2.55% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स। वहीं पे एग्रीकल्चर की बात करें तो 263.6 मिलियन वर्कर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, एंड मैन्युफैक्चरिंग में 65.6 मिलियन वर्कर्स हमें देखने को मिले। मूविंग ऑन, ग्लोबली अगर हम बात करें इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी की, तो 3rd लार्जेस्ट डिजिटाइज कंट्री आ जाते हैं हम वर्ल्ड में, फॉलोड बाय USA एंड चाइना। इवन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके द्वारा भी डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, वो 15.84% से ग्रो करके 209.44 गीगावाट हो गई 2024 में, राइट। इवन हम देखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन आता हुआ दिख रहा है हमें, ग्रीन मेथनॉल आता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। जियोथर्मल एनर्जी, करेक्ट, एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जो कि हमें ग्रो करती हुई दिख रही हैं। एंड इवन आप देखेंगे आज के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत महत्व दिया जा रहा है, एंड ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग की जाए। तो यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 209.44 गीगावाट पहुंच गया 2024 में, जो कि 15.84% का इंक्रीज है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी की, तो 24.5 गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल हमें देखने को मिला 2024 में। वहीं पे विंड एनर्जी में 3.4 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी ऐड की गई 2024 में। सोलर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस रही, राजस्थान स्टेट की। वहीं पे अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो विंड एनर्जी में गुजरात स्टेट की बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया एंड साउथ कोरिया के द्वारा अभी कंडक्ट कराया गया एक्सचेंज ऑफ नोट्स फॉर एनसीईआरटीज टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। देखो एनसीईआरटी क्या है, हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल में है उनके लिए करिकुलम सिलेबस जो होती है वो बनाती है, राइट। क्या बच्चों को पढ़ाना है, कौन सी स्किल्स पढ़ानी है, कौन सा पार्ट पढ़ाना है, कौन सी बुक्स इनके लिए होनी चाहिए, क्या टीचर की गाइडलाइंस होनी चाहिए, टीचर को कैसे पढ़ाना है, उन सारी चीज़ों का ये ध्यान रखती है, राइट। तो बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्या उनका सिलेबस होना चाहिए, करेक्ट, उनका क्या टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, क्या टीचर्स का मैनुअल होना चाहिए, तो उन सब का ध्यान में रखते हुए, राइट, इनके बीच में इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में ये कॉपरेशन साइन हुआ है, एनसीईआरटी टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर साउथ कोरिया $2 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा इंडिया में बाय 2027। चलिए, करेक्ट। एंड क्यों? क्योंकि इंडिया के वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट आ जाते हैं FIEO एंड क्रेडिलिक्स, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। FIEO क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड क्रेडिलिक्स, क्रेडिलिक्स क्या है? ये एक ग्लोबल लीडर है इन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, राइट। इससे क्या होगा? इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, करेक्ट, तो सिंपल बोले फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, राइट। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, राइट, इजीली ले जाया जा सके, सस्ते उस पर ले जा सके एंड सेफली ले जा सके। इसलिए यहाँ पर हमें MOU देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम कई सारी वर्कशॉप्स देखेंगे, ट्रेनिंग होगी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप्स होंगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे बेटर कर सकें, कैसे ऑपरेशनल हर्डल्स होते हैं किसी बिजनेस के, उसको कैसे हम फेस करें, उसको कैसे बेटर करें, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अभी 1561 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ फॉर सप्लाई ऑफ 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स के लिए। कौन बनाएगा? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में, उनके द्वारा बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, 1561 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। 47 टैंक बनाए जाएंगे, T-72 टैंक्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग एंड नास्कॉम, इनके द्वारा भी पार्टनर किया गया टू डिजिटली एम्पावर 1 लाख पीपल। आई रिपीट, नीति आयोग एंड नास्कॉम, राइट, इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई ताकि लोगों को डिजिटली स्किल्स यहाँ पे दी जा सके, राइट। डिजिटल स्किल्स की, या फिर हम बोले जैसे आज के टाइम पे स्किल्स देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड, राइट, SQL आपका हो गया, पाइथन लैंग्वेज हो गई कोडिंग के लिए, राइट। इसके अलावा मार्केटिंग हो गई, राइट। इन ये क्या है? डिजिटल स्किल्स हैं, राइट। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए टू मोर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स, जिनका एम रहेगा कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जा सके रूरल एंड अर्बन एरियाज में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। इसीलिए ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। PNB मेटलाइफ, इन्होंने पार्टनर किया ट्रू होम फाइनेंस के साथ टू ऑफर ग्रुप क्रेडिट लाइन इंश्योरेंस। टेक अ नोट ऑफ इट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने पार्टनर किया चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ट्रू होम फाइनेंस के साथ, ताकि ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके होम लोन कस्टमर्स को, कि मान लो कल को वो होम लोन लेते हैं एंड वो जितना भी अमाउंट का लोन होगा उसकी इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा, ताकि मान लो किसी भी सर्कमस्टांस में या फिर कोई भी सर्कमस्टांस आता है जिसमें वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उस केस में यहाँ पे वो ईजिली पेमेंट कर सके एंड उनका इंश्योरेंस उसको अमाउंट को कवर कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इनटू स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर। जैसे आपका ग्रो प्लेटफॉर्म हो गया, राइट, जैसे आपका ज़ेरोदा हो गया, राइट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स सिमिलर यहाँ पे बनाने की बात की गई, जो कि एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर रह सकता है इन दिस सेक्टर, राइट। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे भी जियो जाता है ना, वो एकदम पूरी मार्केट को पलट देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ मिलके जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक सब्सिडरी लॉन्च करी है, जिससे क्या होगा, ये एक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च करेंगे एंड जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को बाय सेल कर सकते हैं, ETFs को एंड मैनी मोर। मूविंग ऑन, NTPC, इन्होंने पार्टनर किया श्रीलंका के साथ ताकि फॉर मेजर सोलर प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाने की बात की त्रिनकोमली श्रीलंका में, जिसके लिए NTPC ने श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। फोर्ब्स 2025 बिलियनियर्स लिस्ट की बात करें तो इलॉन मस्क यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन निकल के आए हैं। $433 बिलियन इनकी नेटवर्थ टच कर चुकी है। एंड याद रखेंगे ये पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने $300 बिलियन का मार्क किया। देन फर्स्ट इंडिविजुअल थे $400 बिलियन का मार्क क्रॉस करने वाले भी ये एक ही लौते व्यक्ति बन गए हैं। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये $1 ट्रिलियन इनकी नेटवर्थ हो जाएगी बाय ऑलमोस्ट 2027-2028। तो अभी फोर्ब्स के द्वारा ये बिलियनर्स लिस्ट रिलीज की गई थी, जिसमें से इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया। एंड जो ये इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिले बिकॉज ऑफ ए स्पेसएक्स कंपनी, जो कि ऑलमोस्ट $350 बिलियन की वैल्यू करती है। देन अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस वाज ऑन द सेकंड पोजीशन। देन मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग इज ऑन द थर्ड पोजीशन। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो यूएसए में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, 813 बिलियनर्स, फॉलोड बाय चाइना विद 473 एंड इंडिया ऑन द थर्ड स्पॉट विद 200 बिलियनर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अमृत मोहन प्रसाद टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज द BCAS डायरेक्टर जनरल। देखो अगर हम बात करें अमृत मोहन प्रसाद, एज ऑफ नाउ ये क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, ये डायरेक्टर जनरल है शस्त्र सीमा बल के, राइट। एंड अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो भी 6 महीने के लिए ये एडिशनल चार्ज रहेगा। डायरेक्टर जनरल
ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। 6 महीने के लिए इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों? क्योंकि और ये सक्सीड करेंगे जुल्फिकर हसन को, जो कि रिटायर हो गए 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इसरो ने डिस्पैच किया क्रू मॉड्यूल फॉर फर्स्ट अनक्रूड मिशन ऑफ गगनयान। देखो गगनयान, इसको जीवन मिशन भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड ये जो आपका गगनयान मिशन है ना, बेसिकली इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। 2026 तक इसको लॉन्च करने की बात की गई। एंड इससे इंडिया 4th नेशन बन जाएगा जो कि क्रू मिशन भेजेगा स्पेस में। करेक्ट। इससे पहले रशिया, यूएसए एंड चाइना भेज चुके हैं। ये जो गगनयान मिशन है ना, ये 2 पार्ट्स का बना हुआ है। एक है क्रू मॉड्यूल और एक है सर्विस मॉड्यूल। ये आप देख सकते हैं, ये है क्रू मॉड्यूल। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपके क्रू है, जो मेंबर्स होंगे, एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो यहाँ पे बैठ के स्पेस में जाएंगे। तो इसको भी डिस्पैच कर दिया गया है, करेक्ट, फॉर फर्स्ट क्रूड मिशन, जो कि गगनयान मिशन रहेगा। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है सरला एविएशन। इनके द्वारा इंडिया का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य को लॉन्च किया गया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2028 में उसको लॉन्च किया जाएगा। राइट, शून्य। ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान इसको लॉन्च किया गया, जो कि भारत मंडपम में था इन न्यू दिल्ली। एंड बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ये सरला एविएशन है। ये एयर टैक्सी रहेगी। बेसिकली 6 लोग इस एयर टैक्सी में बैठ सकते हैं। एंड 20 से 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। शॉर्ट ट्रिप्स की रहेगी। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकती है। 680 किलोग्राम तक का ये पेलोड कैरी कर सकती है। एंड जनरली हम देखेंगे ये कंपनी सर्विसेज जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में, पुणे में, इन सिटीज़ में यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, बेंगलोर में प्रोवाइड कराएगी। करेक्ट। ये सरला एविएशन, इनका प्लान है कि फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस भी लॉन्च की जा सके अर्बन एरियाज में, ताकि इन द नीड यहाँ पे ये लोगों की हेल्प कर सकें। इवन अगर फ्री एम्बुलेंस का याद आया, 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस अभी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई, वो है जोमेटो के द्वारा। कहां पर लॉन्च करी गई है? ये की गई है गुड़गांव, हरियाणा में। राइट, 10 मिनट्स एम्बुलेंस सर्विस। राइट, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराने की इनके द्वारा बात की गई। कहां पर? गुरुग्राम, हरियाणा में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो रिसर्चर्स के द्वारा भी 2 नई गोबी फिश स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं आंध्र प्रदेश में, जिनका नाम है हेमिंगोबियस होविनी एंड मुगिलोबियस त्रिगिनस। तिग्रीनस। राइट, ये 2 वो स्पीशीज हैं जो कि आंध्र प्रदेश में भी इन 2 न्यू गोबी फिश की डिस्कवर की गई। फिर इसके बाद आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। फॉर्मर एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट मोरिक्सियो फ्यून्स, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 65। एल सल्वाडोर में 1959 में इनका जन्म हुआ था। एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एल सल्वाडोर के 2009 से लेके 2014 तक। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। एंड इसका जो रोल रहा है पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 7वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया और इसकी एक थीम रहेगी। थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ये इसकी थीम रहेगी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। और पहली बार इस डे को 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। गर्ल्स की लाइफ में जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार हमने 17वां एडिशन ऑब्जर्व किया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का। ऑल्सो इस बार हमने देखा था 10वीं एनिवर्सरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की, जो 22 जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। एंड ये जो स्कीम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसकी थीम क्या रहेगी? एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। राइट, मार्क करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक को। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 47वें प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45th प्रेसिडेंट भी थे एंड अब 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये सक्सीड करेंगे जो बाइडन को। जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट थे USA के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है S गोपाल कृष्णन। ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे राकेश रंजन को। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP मॉर्गन इंडिया। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है प्रणव छावड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड करेंगे प्रदेव सिंह को।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक इंडिया। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड के कौन अपॉइंट किए गए हैं, रीअपॉइंट किए गए हैं कि वो हैं अमिताभ चौधरी, यहाँ पे रीअपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉन इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो है जस्टिस संजीव खन्ना, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे DY चंद्रचूड़ जी को, जो कि 50वें चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ मोल्डोवा। वो है माया सांधु, इनको यहाँ पे रीइलेक्ट किया गया टू द सेकेंड टर्म ऑफ मोल्डोवा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग झारखंड इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन। तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर झारखंड इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बैक्टिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर इन सिंगापुर। तो किनको अपॉइंट किया गया है, वो है VD शेफिकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं वॉल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। NAFED के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, वो हैं दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी चेयरमैन की पोस्ट संभाली ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो है विपिन कुमार, ये बने हैं, ये सक्सीड करेंगे M सुरेश को। नेक्स्ट, कौन बने हैं MD एंड CEO ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड इन जनवरी 2026। तो वो है शाश्वत शर्मा, ये सक्सीड करेंगे गोपाल विट्ठल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। वो है अलका तिवारी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं नई चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म। वो है नवीन चंद्रा रामगुलम, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म। नेक्स्ट, एलेक्स दीदर फेलिस एम, इनको रिसेंटली स्वॉन इन किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का, हैती के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MCX, जो कि है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। वो है प्रवीणा राय, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड प्रवीणा राय रिप्लेस करेंगी PS रेड्डी को, राइट। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मोहम्मद तैयाब इकरम यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के। सो अरविंद सिंह सहानी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL, ये रिप्लेस करेंगे सतीश कुमार वादुगिरी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। सो हारिनी अमरसूर्या यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड, राइट। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को अपॉइंट किया गया 6ठा प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। सो अब्दुल्ला निगमतोविच अरीपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, किन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल एज द गुडविल एम्बेसडर। वो है कौन है, वो है श्रिया पिलगांवकर, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। सो अब्दुल्लाई मैगा, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के। किनको अपॉइंट किया गया है, वो है जस्टिस सूर्यकांत को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन, राइट। और ये सक्सीड किनको करेंगे, जस्टिस BR गावाई को। Next students, let's move to the homework section. First question is, tell me India along with which country has partnered and they have signed an agreement where they will be talking about critical minerals. Second question, tell me recently which country will be hosting the 28th edition of CSPOC.
right? CSPOC, and also give me the full form of this CSPOC and name that country. Third question, which country became the 34th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Fourth question, recently tell me which country is having the most powerful passport in the world, right? And what is the rank of India in this passport? Then one more question, student. Fifth question is, tell me recently, if I ask you, who became the 47th president of USA and 50th vice president of USA? Tell me. So these are your 5 homework questions, students. If you find this session interesting, do hit the like button, right? And share the link of this video with your friends.